Today I'm going to teach you unit number 5. यूनिट नंबर 5 को हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम आते हैं पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 पर डियर स्टूडेंट्स लिखा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में है extract the salient points of the unit and develop a mind map to summarize the text. जो रीडिंग हमने की थी उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी की थी, उसके आपने सैलेंट फीचर्स यानी नुमाया सैलेंट पॉइंट्स यानी नुमाया पॉइंट्स निकालने हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 सैलेंट पॉइंट्स निकालने हैं. अब जो लेसन है उसका सैलेंट पॉइंट्स निकालने के लिए हमें लेसन की तरफ भी जाना होगा कि लेसन में क्या क्या है, ताकि रिवीजन भी हो सके और साथ साथ में हम सैलेंट पॉइंट्स भी निकाल पाए. सो स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स द यूनिट रोड सेफ्टी. आई विल रीड एंड यू ट्राई टू extract the salient points from it. So I'm going to start the reading. Every day many people face road accidents. Some are killed and some are injured or maimed. So it is important for us to learn how to use the roads properly and safely. No sensible or careful person would like to be involved in an accident. As the roads are very busy nowadays, we should be very careful while crossing a road. It is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one is available. Now look at the second paragraph. कहते हैं it is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge whenever one is available. It is the salient point of this paragraph. जब पैदल चलने वाले रोड क्रॉस करते हैं तो क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉस यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉस को के ऊपर ही चलना है. अगर वो अवेलेबल नहीं है देन आपने क्या करना है कि बलाई ब्रिज का रास्ता इख्तियार करना है. ठीक है, इट इज़ द मेन पॉइंट to keep in your mind. Never cross a road by dashing across it. That is inviting trouble. If there are no crossings, then we must look carefully at right and left and cross only when it is safe. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर वहाँ पे क्रॉसिंग भी नहीं है और ब्रिज भी नहीं है, तब पेडेस्ट्रियन को क्या करना चाहिए? पहले लेफ्ट फिर राइट की तरफ देख के और ये सेटिस्फाइड हो जाए कि अब मैं महफूज हूँ, सेफ हूँ, तब उनको रोड क्रॉस करना चाहिए. द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं. सम ऑफ अस टेक बस टू स्कूल. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट ट्राई टू गेट ऑन और ऑफ अ बस while it is still moving. Once again, it is a key point, a salient point in this very paragraph कि जब आप बस में सफ़र करते हो तो ये ख्याल रखना है कि जब बस हरकत में हो, चल रही हो, तब आपने चढ़ना या उतरना नहीं है. It is also the key point in critical thinking which we will do on the whiteboard. We must not fool around while in the bus. A sudden lurch can send us knocking our heads against something hard. The next paragraph. Riding a bicycle can be dangerous too. We must pay attention on the road and never cycle too far out to the middle of the road. We must obey all traffic rules. It is the key point that we must obey all the traffic rules. Why? Also, we must take sure our bicycle are in good condition with the working brakes, lights, etc. It is also once again a key point, a salient point कि आपने इस बात का यकीन करना है कि आपके साइकिल या गाड़ी के लाइट्स, ब्रेक्स और टायर की कंडीशन अच्छी हालत में हो. We should avoid, next paragraph, we should avoid overspeeding. Find out what causes you to speed up. Is there an urge to speed when you have a driver close behind? Or is it an effort? Or is it an effort to keep up with the traffic flow?
or do you simply enjoy overtaking? It is especially important to lower the speed while approaching schools on narrow roads, hilly areas, rural areas, and when visibility is poor. Wet roads and overspeeding may cause an accident. Next paragraph, dear students. Traffic rules have been designed with safety foremost in mind. It takes into account safety for all, including pedestrians. Preference is to be given to pedestrians and children in crossing the road. Follow the lane and keep the required distance between vehicles. It is important to display appropriate indications or signals, especially while changing lanes or before a turn. Respect for other drivers on the road is obligatory to road safety. A seat belt, also known as a safety belt, is a vehicle safety belt, which is designed to secure the persons sitting in vehicle against, next page, harmful movement that may result during a collision or a sudden stop. A seat belt reduces the risk of death or serious injury in a traffic accident. Next paragraph. Traffic signs are very important as they warn about accident-prone spots so that the driver can reduce the speed of the vehicle. Signboards on the road are vital clues about road design so that the person behind the wheel can exercise caution. There should be no compromise on the quality of brakes and tires. Now look at the student, this sentence, it is very key sentence in this very paragraph, that there should be no compromise on the quality of brakes and tires. Further, it is imperative to inflate tires with the right air pressure to avoid tire bursts. Bursts on road. Apart from it, lights and indicators should be in proper working condition. The last paragraph is, road safety is a collective responsibility of the government and people. We should always drive carefully and take all precautionary steps for our safety. The important thing is to stay alert at all times while using the roads. We must know what's happening around us. In that way, we can take necessary action to avoid danger whenever we see one. Road safety is very much up to how we use the roads. Use them carefully and we may be able to use them for a long time. Use them carelessly and we may never be able to use them again. So dear students, ये है आज का हमारा यूनिट रोड सेफ्टी। सवाल ये पैदा होता है कि इस यूनिट में वो कौन कौन से सैलेंट पॉइंट्स है, 7 सैलेंट पॉइंट्स हमने निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, ताकि हमें और मज़ीद आसानी हो जाए कि रोड सेफ्टी यानी एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड। टुडे वी हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, and in critical thinking we have some salient points. 7 salient points are given in your book, which we will extract from the lesson, from all the text. What are these 7 points? वो 7 points कौन कौन से हैं, which we will do now on the whiteboard. Salient points. Salient points. Here students, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना होगा कि ये लेसन किस बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट द लेसन। द फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1, दिस लेसन gives
comprehensive details regarding traffic rules. Yes, students, the first point of this lesson, the first selling point is that this lesson, it means road safety. It means road safety. It means road safety. This lesson means road safety. Road safety. Road safety gives a comprehensive, जो एक मुकम्मल डिटेल देता है about what? It gives comprehensive details regarding traffic rules. Traffic rules के बारे में मुकम्मल हमें लेसन दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है. So the next one is number 2. Now we will come towards the pedestrians. हमें अभी पेडेस्ट्रियन की तरफ आना होगा. जब पैदल चलने वाले हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसा रोड क्रॉस करना चाहिए. द पेडेस्ट्रियन शुड यूज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और एन ओवरहेड ब्रिज व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. जब पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले पैदल चलते हैं, रोड जब क्रॉस करते हैं, तब उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने जेब्रा क्रॉस की तरफ देखना है, जेब्रा क्रॉस पर अबूर करना है सड़क को. अगर जेब्रा क्रॉस अवेलेबल नहीं है देन दे शुड यूज ओवरहेड ब्रिज. ठीक है, राइट ऑन. द पेडेस्ट्रियन should use the pedestrian should use pedestrian crossing. Pedestrian crossing or an overhead bridge और एन ओवरहेड ब्रिज. पैदल चलने वाले को जेब्रा क्रॉस, जिसे हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी कहते हैं, क्रॉस करना चाहिए. इफ नॉट अवेलेबल देन दे शुड यूज ओवरहेड ब्रिज. इट इज द सेकंड सेलिंग पॉइंट ऑफ द रोड सेफ्टी लेसन. नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द थर्ड वन व्हिच इज स्टूडेंट्स. जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था कि हम में से कुछ लोग स्कूल जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं. अब बस का इस्तेमाल हमने देखा है हमारे मुआशरे में ऐसे होता है, जब बस चल रही होती है तो चलने के दौरान ही बच्चे उसमें चढ़ जाते हैं या चलने के दौरान ही बच्चे उतर जाते हैं. सो द नेक्स्ट थर्ड सेलेंट पॉइंट इज try not to on or off the bus while it is moving. जब बस चल रही है तब आपने उसे उतरना या चढ़ना नहीं है. राइट ऑन. Try not to on or off while the bus is moving. जब बस चल रही हो then you should not off or on. जब बस हरकत में होती है तब आपने उतरना या चढ़ना नहीं है. That will be the result of accident. ये खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो सकता है. इसके आप ये ऐसा करोगे या चढ़ोगे चलती बस में या उतरोगे तब आप खुदा न खास्ता गिर सकते हो, और जब आप गिरोगे तो पीछे से कोई और व्हीकल आके कोलिजन हो सकता है या आपके ऊपर खुदा न खास्ता वो चढ़ सकता है. सो द फोर्थ वन इज वी शुड फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक.
हमें ट्रैफिक के तमाम रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब जो मेन रूल हैं वो है आपके इंडिकेटर्स, ठीक है, वो है इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल। इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल क्या है कि जब आप यू टर्न लेते हो तो आपको राइट हैंड की तरफ यू टर्न लेते हो तो आपको इंडिकेटर एप्रोप्रिएट इंडिकेटर लगाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप रोड में हो, रोड के दरमियान में हो, लेन को बदलना चाह रहे हो, तब भी आपको चाहिए कि आप इंडिकेटर बदलो। सो राइट ऑन द नेक्स्ट रूल नंबर 4, वी शुड follow all the rules of traffic. It is important to display appropriate indications before U-turn or while changing lane Dear students, it is very important point which we have to inculcate and हमें ड्राइव करने के दौरान इस पॉइंट को याद रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। क्या है? We should follow all the traffic rules. Very major point, हमें तमाम ट्रैफिक रूल्स को अपनाने चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। It is important to display appropriate indication. आपने appropriate जो मुनासिब इंडिकेशन है, इशारे हैं, वो लगाने हैं। किस टाइम लगाने हैं? Before U-turn और while changing the line. जब आप रोड पे चल रहे होते हो, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, तब आपने appropriate indication या सिग्नल्स लगाने हैं। जब आप यू टर्न लेते हो या फिर साथ साथ में रोड के दरमियान में से लेन को बदलना चाहे, then you have to display appropriate indication. Now we will come towards the fifth one. The fifth one is also very important, that avoid overspeeding. ओवरस्पीडिंग यानी तेज रफ्तारी से गुरेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जब रोड गीले होते हैं, सड़कें गीली होती है और या आप ओवर स्पीड में जा रहे होते हो, then it can or it may cause accident. Next one, fifth one, avoid overspeeding. Avoid overspeeding because when the roads are wet it can be caused accident. When the roads are wet, it can be caused accidents, or you can say overspeeding may cause accidents. Overspeeding may cause accidents. Avoid overspeeding. Number one, when the roads are wet, जब सड़कें गीली होती है, it can be caused accident. इससे एक्सीडेंट का होने का खतरा होता है।
ओवर स्पीडिंग में कॉज एक्सीडेंट और ओवर स्पीडिंग से भी एक्सीडेंट्स रुनुमा होते हैं. Now we will come toward the next one, the sixth one, that is seat belts. Dear students, while driving the car, try or you should or you must fasten the seat belts. The sixth, we must fasten the seat belts while driving. We must fasten the seat belts while driving. It is also very important point to act upon. The last one is we should not compromise on the quality of brakes and tires. We should not compromise. Write down. We should not compromise on the quality. We should not compromise on the quality of किस चीज की क्वालिटी पे? Of tires and brakes. Keep in your mind, जब भी आप ड्राइव करते हो तब आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है on the quality of tires and brakes. So dear students, these all are the 7 salient points. These all are the 7 salient points of your entire lesson. ये वो 7 पॉइंट्स है जो आपके तमाम लेसन में से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं एंड विच इज़ पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, जो आपके एक्सरसाइज का एक हिस्सा भी है. वहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग में है कि 7 सैलेंट पॉइंट्स आपने अपने लेसन से निकालने हैं. सो द फर्स्ट वन इज this lesson gives a comprehensive details. Which lesson? Safety. The lesson number 5, which is called the road safety. इनमें से हमने 7 salient points निकाले हैं. The number 1 is this lesson gives a comprehensive details regarding traffic rules. The second, the pedestrian. The pedestrians should use pedestrian crossings or an overhead bridge. Try number 3, try not on or off while the bus is moving. जब बस चल रही होती है, हरकत में हो, तब आपने उस बस से ना उतरना है ना चढ़ना है. जब कंप्लीटली ये स्टॉप हो जाए, then you can on, then you can off. Number 4, we should follow all the rules of traffic. हमें चाहिए कि हम ट्रैफिक के तमाम रूल्स को अपनाएं. It is important to display appropriate indication. It is very necessary for all drivers कि जब आप रोड के दरमियान जा रहे होते हो और एक लाइन से दूसरे लाइन की तरफ चेंज करना चाह रहे हो, then you have to display appropriate indication. और if you are in mood of taking U-turn, अगर आप U-turn के मूड में हो तब then also you have to put or display appropriate indication. So number 5 भी ये कहते हैं. Number 4, we should follow all the traffic rules. It is important to display appropriate indication before U-turn से पहले और before cross changing lane या फिर lane change करने के दौरान या उससे पहले. The next, we must fasten the seat belts while driving. ड्राइव करने के दौरान हमें सीट बेल्ट बांधना चाहिए और ज़रूर बांधना चाहिए. इट इज़ वेरी की पॉइंट फॉर द ट्रैफिक रूल्स. द 7th one we have, that is
we should not compromise on the quality of tires and brakes. हमें टायर्स और ब्रेक्स के क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता नहीं करना चाहिए. So dear students, I hope you understood today's lecture and I hope you may be aware now how to extract the silent picture from the lesson. हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हम जो मोटे मोटे जो मेन सैलेंट और की पॉइंट्स हैं वो हम लेसन से निकाल दें और यहाँ पे लिख दें. इसीलिए for the same reason, first of all we read all the lesson and while lesson we extracted the salient points and then we wrote on the whiteboard. So now students, for your homework, आपके homework के लिए ये है कि once again you will read the lesson. एक दफ़ा फिर आप लेसन को रीड करोगे और रीड करने के दौरान जितने भी इसके अलावा इन 7 पॉइंट्स के अलावा जितने भी सैलेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं तो नोटबुक उठा के वो उस पे लिखने हैं. ये सैलेंट पॉइंट्स जितने भी हो, ये 5 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं. एंड देन चेंज दीज सैलेंट पॉइंट्स इन योर ओन सेंटेंसेस. फिर आपने हूबहू वही सेंटेंसेस नहीं निकालने हैं जो आपके लेसन में हैं. आपने क्या करने हैं, वो सेंटेंसेस को अपने अल्फाज में चेंज करने हैं सो दैट यू मे understand how to attempt sentence and you may understand how to write a comprehensive paragraph which we have discussed in my previous lecture. जो मैं आपको अपने previous lecture में पढ़ा चुका हूँ कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और सेंटेंस के बारे में भी हमने बात की है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस क्या है, उसके आखिर में क्या होता है. सो सैलेंट पॉइंट्स के निकालने का मतलब ही यही है, जो भी सैलेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसको हूबहू पहले आपने नोटबुक पे उतारने हैं. नोटबुक को उतारने के बाद फिर आपने उसको चेंज करने हैं अपने वर्ड्स में. जैसे ही आपने अपने वर्ड्स में चेंज किए देन मेक पैराग्राफ ऑफ दी सैलेंट पॉइंट्स. फिर आपने उसका एक पैराग्राफ बनाना है. देन अप्लाई द ऑल द रूल्स विच आई टोल्ड यू. वो रूल्स आपने अप्लाई करने हैं जो मैंने पैराग्राफ के बारे में बताया है कि पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होता है और उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा है, इसका बॉडी ऑफ सेंटेंसेस कौन से, और भी आपने फिर लास्ट में कंक्लूजन देता है. इट विल हेल्प यू to know how to write a paragraph. So dear students, thank you so much for watching me and the next lecture will be about the formal letter writing. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में होगा और उसके बाद एक और लेक्चर इसी में है, इसी लेसन के बारे में है. देन दिस लेसन विल बी फिनिश्ड. फिर हम कोई और नेक्स्ट लेसन ही स्टार्ट करते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग मी. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.